Videos on, all of you. Keep the videos on. Take out sum number 7. Seventh sum. Sorry. See, last lecture we discussed what was trial balance. So trial balance is nothing but a statement. Okay, it is a list showing the balances of all the ledger accounts at the end of the year. So why do we make trial balance? Remember the reasons for making trial balance? There is just actually one important reason to make trial balance, and what is that? Just one good reason for making trial balance. Remember, to check whether the debit is equal to the credit. check whether the debits are equal to credit. Okay, whether you have done the arithmetical part correctly. बाकी तो omission का error हो सकता है, आपने record ही नहीं किया, ऐसा भी हो सकता है. Okay, other errors, mistakes are possible, but whether you have done debits or credits correctly, that is given by the trial balance. Okay, so it tallies. Trial balance will tally itself, which will be a hint that your debits are equal to credits. Arithmetical accuracy has been followed. Baki, apart from that, another use of trial balance is that it acts as a link. आपको ledger के बाद final accounts करना है, journal के बाद ledger, ledger के बाद year end पे final accounts करना है. तो final accounts में आपको profit and loss ढूंढना है income expense की मदद से, और balance sheet में assets और liabilities दिखाने हैं. तो ये सभी चीजें आपको लेजर से कॉपी करने की जरूरत नहीं है. आप एक पहले से लिस्ट रेडी करके रख लो ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में से डायरेक्टली कॉपी करके आप फाइनल अकाउंट्स बना सकते. ओके, सो मेनली ट्रायल बैलेंस का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है दैट डेबिट्स विल बी इक्वल टू क्रेडिट्स. यू विल बी एबल टू चेक वेदर यू हैव डन all the entries ka two effects correctly. Okay, now take sum number 7. You just need to know in the problem that whether what accounts have debit balance, what accounts have credit balance. Okay, so mark down sum number 7. Capital. What is capital? Credit or debit? I think capital is credit, right? From the following ledger balances, prepare trial balance of Vinod as on 31st March 2012. So I think we'll assume 31st March 2012 is our year ending. Okay. Generally, trial balance and final accounts are made on the end of the year. So 31st March 12 is your year ending. So capital is having credit balance. What about salary? Salary will have which balance? Debit balance. Debit balance. Expense. Wages will have debit balance because expense. Commission DR debit diya hua hai, so that is expense debit. Purchases on the next page. Purchases are debit expense. Debit. Printing and stationery. Debit. Debit expense. Investments. Debit. That is debit. Asset. Carriage outwards. That is expense. So debit. Commission CR diya hua hai, that means it is credit. Income. Purchase returns are what? Less from purchases. Less from Credit. purchases. That is credit. Okay. Purchase returns are credit. Purchases are debit. So purchase returns are opposite. Credit. Sales are credit. So sales return are opposite. So debit. Advertisement. Advertisement will be what? Expense hai to debit. Advertisement expense debit. Bank loan. What balance will bank loan have? Credit, because it's a liability. Then we have bad debts. Bad debts are what?
expense so Debit. debit, mobile charges are expense so debit, interest CR credit दिया हुआ है so credit, debtors are assets so debit, postage and telegram debit. Sales return, what balance will sales return have? Debit. Debit. Okay, opposite of sales. Furniture will have debit balance, asset. Land and building is debit, asset. Debit. Drawings are debit, opposite of capital, negative capital. Sales are credit. Okay, sales are credit. RDD. What is RDD? What is RDD? Reserve for doubtful debts. RDD will have which balance? Credit balance. Cash in hand is, sorry, cash at bank is asset, so debit. Insurance is expense, so debit. Plant and machinery is asset, so debit. Opening stock is the first expense of this year, so debit. Rent, rate, and taxes are expenses, debit. And creditors are liabilities, so credit. Okay. Sir, bank loan credit now. Bank loan credit. All liabilities, all loans are credit. Okay. All liabilities, all loans are credit. Draw it up quickly. साथ में करते जाओ फटाफट. Journal format is what we learned in the last lecture. Now I'm going to take another format that is called as ledger format. तो ये खाली format अलग है, बाकी पूरा sum same है. Okay. अभी ledger format देख लो, आपने journal format देखा हुआ है. Trial balance as on 31st March 12. देखो, ये खाली format अलग है. एग्जाम में आप कोई भी एक फॉर्मेट यूज कर सकते हो, जर्नल फॉर्मेट या लेजर फॉर्मेट. अगर कॉलेज ने स्पेसिफाई किया कि यही पर्टिकुलर फॉर्मेट चाहिए तो फिर वो फॉर्मेट यूज कर लेना. दिस इज योर लेजर फॉर्मेट. Some mobile charges has debit or credit मोबाइल balance. चार्जेस आर डेबिट एक्सपेंस. Okay. I मोबाइल thought चार्जेस, drawing because it is mobile charges. मोबाइल मींस टेलीफोन. टेलीफोन चार्जेस आर एक्सपेंस, सो डेबिट. Okay, thank you, sir. Okay. So this is ledger format of a trial balance, serial number, particulars, LF, amount rupees. Sir, this will be on one page or two pages? One side, single side. Single side. Number, particulars, LF, amount rupees. This is credit. This is debit. So this is a ledger format of a trial balance. लेजर फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, लेजर जैसा दिखेगा. डेबिट साइड लेफ्ट में, क्रेडिट साइड राइट में. बाकी पूरा सेम है, नंबर पर्टिकुलर. एंड जेएफ कॉलम नहीं आएगा इसमें, एलएफ कॉलम ही है. ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन अकाउंट. रिमेंबर, ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ जर्नल, नॉट अ लेजर. इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट. दिस स्टेटमेंट कैन बी मेड इन एनी फॉर्मेट, बट होगा दोनों में एलएफ. Why do we have LF in trial balance? Remember we discussed that in the last lecture. Why do we have LF in trial balance? What was the reason for having LF in trial balance? Remember? Because it is a list. List copied from ledger. Yeah. List copied from ledger. So ledger का balance को cross check करने के लिए you have that LF column. Both the places you will have LF. Sir. This is sum number 7. Sum number 7. Ledger format this is. Okay. Ledger format of trial So balance. this is to be done in journal or ledger format. Sorry. This one is to be done in ledger format or Ledger format. See now I have drawn 7 some ledger format. एग्जाम में यू कैन यूज एनी फॉर्मेट ऑफ योर चॉइस. लेकिन अगर कॉलेज ने कंपलसरी बोला, बीच में एक आध साल एनएम ने बोला था लेजर फॉर्मेट 3 years ago, तो सबको लेजर फॉर्मेट करना पड़ा कंपलसरी. अगर कॉलेज बोल रहा है पर्टिकुलर फॉर्मेट तो पर्टिकुलर फॉलो करो.
अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो कोई भी फॉर्मेट फॉलो करो, आपका चॉइस है. ओके, तो ड्रॉ इट. एंड नॉर्मली जैसे करते हो वैसे रिकॉर्ड करना है. सबसे पहला है कैपिटल अकाउंट. Sorry, capital account is credit balance. So right hand side is credit. Capital account is internal liability, so credit 1,40,000. Salary, दोनों का सीरियल नंबर 1 2 3 4 से ही स्टार्ट होगा. डेबिट में भी 1 2 3 4, क्रेडिट में भी 1 2 3. Salary account is 4,000 debit side. Wages is 8,500 debit because it's your expense. Commission DR दिया हुआ है. Commission is having a debit balance of 1,500. Then purchases we have 30,000 debit balance. Printing and stationery expense, so debit 1,950. Investments is asset, so debit. Carriage outward is an expense, so debit. Commission is CR दिया हुआ है, so on the credit side you will write So the do or buy is not supposed to be. नहीं, no to no buy. टू बाय कुछ नहीं लिखना है. लिस्ट ही है वो, खाली जर्नल के जैसे लिस्ट कर रहे थे वैसे लेजर में फॉर्मेट में लिस्ट कर रहे हो. वो खाली फॉर्मेट है, वो एक्चुअल जर्नल लेजर जैसा कुछ नहीं है वहां. कमीशन अकाउंट इज क्रेडिट 850. कुछ टू बाय कुछ नहीं. Then purchase returns is credit balance. Purchase returns, the credit side 2,150. Advertisement is debit 3,500. The 2 by we write mainly for ledger accounts. मतलब वो जर्नल को पोस्ट करते हो ना, टू एंड बाय टू एंड बाय टू एंड बाय, वो एक्चुअल पोस्टिंग के लिए. दिस इज नॉट पोस्टिंग, दिस इज जस्ट अ लिस्ट, रफ लिस्ट, फेयर लिस्ट, लिस्ट ऑफ ऑल द लेजर बैलेंसेस. वो लेजर तो वैसे ही पड़ा हुआ है. ये लिस्ट नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, सीधा फाइनल अकाउंट्स कर सकते हो. बट हम लोग अपने तसल्ली के लिए बना लेते हैं कि भैया डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है कि नहीं, चेक कर लेते हैं. बैंक लोन is a liability, so credit. Bad debts are expenses, so debit. Mobile charges are expenses, so debit. Interest is credit दिया हुआ है, so interest account is credit. Debtors are assets, so debit. Postage and telegram is expense, so debit. Sales returns are less from sales, like an expense, so debit. Furniture
is an asset, so debit. Land and building is an asset, so debit. Drawings is reduction of capital, so debit. Sales are an income, so credit. RDD means reserve for doubtful debts. What is RDD? Reserve for doubtful debts. RDD will have which balance? Credit. Credit balance. Debtor का reserve है तो credit, creditor का reserve है तो debit. Opposite, right? RDD is reserve for doubtful debts. Debtor का है तो credit, creditor का है तो debit. Then cash in hand is an There's asset. nothing is mentioned credit, right? और For RDD. RDD के लिए कभी कुछ मेंशन करेंगे ही नहीं. RDD मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर का रिजर्व. डेटर का रिजर्व है तो क्रेडिट ही रहेगा. रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, RDD RFDD दोनों क्रेडिट. रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर है, क्रेडिटर का रिजर्व है तो डेबिट. So like something for interest. So nothing is given like debit or credit. What do we consider it as? Debit. See na that note below trial balance का format items. Rent, interest, commission and discount. They can be both, na, expense as well as income. So if nothing is specified, we assume they are all expenses. So debit side. Cash in hand is asset, so debit. Insurance is an expense, so debit. Plant and machinery is an asset, so debit. Opening stock, the first expense of this year, so debit. Rent, rates and taxes are expense, so debit. And creditors are liabilities, so credit. This is your ledger format of trial balance, just a different format, a different type of presentation, and you total it up and it should tally. Okay. 43, 68, 171, 78. 286,000 आ रहा है क्या? Does it tally on 2,86,000? Check. $2,86,000. Check, check, check. Yes, sir. It is 2,86,000. Debit side also? Yeah. Okay. तो क्लियर विद द लेजर फॉर्मेट कोई ज्यादा अलग नहीं है, लेजर के जैसा है, खाली जेएफ नहीं बनाना है, एलएफ बनाना है. ठीक है, बिकॉज लेजर है, लेजर से कॉपी कर रहे हो, इसकी लिस्ट है. या 2,86,000 इट टैलीज. ओके, आपको मैं लेजर का फॉर्मेट भी दिखा देता हूं. आप अगर पेज नंबर 111 से देखो, पेज नंबर 111, those are your problems of final accounts. उधर देखो, ट्रायल बैलेंस विल बी इन द क्वेश्चन. रिमेंबर, आपको पहले लेक्चर में भी बताया था, इन केस ऑफ फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि वहां से कॉपी करके आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो. ये सब लेजर फॉर्मेट वाले ट्रायल बैलेंस है. पेज 111, पेज 112, 113, 114, every problem is having ledger format of trial balance.
Can you all see that? उधर वो लोग ने LF नहीं बनाया है, सीरियल नंबर नहीं बनाया है, खाली पर्टिकुलर और अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट. Got it? Left hand side is debit, right hand side is credit. So that's all your ledger format of trial balance. Okay. Now I want you all to take some number 12. 12th sum पे आ जाओ सब लोग. Sum number 12. सर एग्जाम में कौन सा फॉर्मेट लिखने का? एग्जाम में एनी ऑफ द टू फॉर्मेट यू कैन मेक, जो इजी लग रहा है वो करो. अगर कॉलेज ने स्पेसिफाई करके दिया है कि भैया जर्नल फॉर्मेट ही करो या लेजर फॉर्मेट ही करो तो फिर फॉलो दैट. सर टेस्ट अपना टेस्ट में तो दिया रहेगा स्पेसिफाई करके, जर्नल फॉर्मेट है या लेजर फॉर्मेट स्पेसिफाई. कुछ नहीं दिया तो जो मर्जी है वो कर सकते हो. ओके, यू कैन मेक एनी फॉर्मेट ऑफ योर चॉइस, नो प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 12. गर्व्स कैपिटल. गर्व्स कैपिटल क्या होगा? Credit. We are doing it in the books of GERV. Okay, GERV's capital is credit. Bills receivable are debit, asset. Sales are credit, income. Purchase returns are credit, reduction from purchase like an income, credit. Wages are debit, expense. What will be depreciation on machinery? Debit. Expense. Salaries, Debit. debit, expense. Cash on hand, debit, asset. Interest on bank overdraft, think about. Debit. Why? It's an Bank expense. Bank overdraft is like a loan. Loan. You pay interest, so that's your expense, right? So debit. Then deposit with municipality, debit. Any deposit is asset. Deposit मतलब क्या? आपने एडवांस में कोई प्रॉपर्टी टैक्स या फिर कुछ रेंट वगैरह का पैसा दे के रखा है, उनको बेनिफिट मिलना बाकी है. तो एनी डिपॉजिट, एनी एडवांस, एनी प्रीपेड एक्सपेंस, ऑल आर डेबिट, एसेट. जनरली यू पेड फॉर टैक्सेस. आपको हर साल प्रॉपर्टी टैक्स पे करना होता है तो आप एडवांस में 3-4 साल का पे करके रख देते हो. कमीशन रिसीव्ड. व्हाट इज कमीशन रिसीव्ड? क्रेडिट, इनकम. पेटी कैश ऑन हैंड, debit, asset. Interest received in advance, Credit. it's a liability. Commission receivable, Debit. it's an asset. Railway freight, debit, it's an expense. Traveling expense, debit. Customers, customers means debtors, so debit. Girls drawings, Debit. drawings are debit. Purchases are debit, biggest expense. Bills payable, Debit. bills payable, Credit. क्रेडिट. लाइबिलिटी हो, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट, बिल्स पेबल क्रेडिट. कार्टेज, Debit. डेबिट एक्सपेंस. कैरेज इनवर्ड, डेबिट एक्सपेंस. सैलरीज, डेबिट एक्सपेंस. मशीनरी, डेबिट एसेट. चैरिटी, डेबिट एक्सपेंस. पेटी कैश एक्सपेंसेस, डेबिट एक्सपेंस. एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, credit. It's a liability. Advance taken is a liability. Advance given is an asset. Advance taken एक तरह का liability है, हमें benefit, interest, goods कुछ भी देना बाकी है. That's a liability, so that's credit. Advance received from customer is credit. Loan to Rishabh. Loan to Rishabh मतलब loan दिया है. Think. We are going to earn the benefit later. It will be debit. Debit. Loan taken होता तो क्या होता? Credit. Credit होता, liability. तो loan given है तो debit. It's an asset. Got it? Cash at देना बैंक, debit. Reserve for discount on credit. अरे ये याद रखना पड़ेगा. Final account में explain करूंगा detail. So reserve for discount on creditor will have debit balance. Creditor का reserve debit balance, debtor का reserve credit balance. Opposite. Debtor का reserve credit, creditor का reserve debit. Prepaid insurance, debit asset. Advertisement, debit expense. Suppliers, credit because liability. And loan from Joel, Liability. liability, so credit. Okay,
चलो स्टार्ट करो. लेजर फॉर्मेट से करना है सबको. सम नंबर 12. लेजर फॉर्मेट in the trial balance of, yeah, in the books of trial balance as on. Mr. Garg, as on 31st 30th September 1999. Doing ledger format, so do it by ledger format. This is your ledger format of trial balance. Okay, खाली दिखता लेजर जैसा है वो लिस्ट ही. इट इज सिंपली सिंपल लिस्ट, सिंपली अ लिस्ट ऑफ ऑल द ledger balances at the end of the year. So ledger format बनाते जाओ. 1,50,000 is capital. This is ledger format. कल हमने जर्नल फॉर्मेट किया था. जर्नल जैसा दिखता है. ये लेजर फॉर्मेट है, लेजर जैसा दिखता है. फॉर्मेट ही है. कौन सा करना है क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया है, जो मर्जी है बनाओ. खाली डेबिट क्रेडिट का ध्यान रखना. इधर डेबिट है तो लेफ्ट में, क्रेडिट है तो राइट में. 2 बाय मत लिख देना. कोई कोई घाई घाई में 2 बाय लिख देता है लेजर फॉर्मेट में. यू आर नॉट सपोज टू राइट 2 बाय 2 बाय एनी. नो नीड टू राइट 2 बाय 2 बाय.
So Yeah, salaries account is given twice, so can we club it or should we? you can club it. Actually, it's a printing error, and you can write it separately also. Okay. जनरली आएगा नहीं ऐसा सब में, एक ही सैलरी है, वो प्रिंटिंग एरर है. ठीक है, यू कैन राइट. क्लब का या तो भी चलेगा, यू कैन. Check whether it tallies both the sides total. Do it on your own. That's your ledger format of trial On the balance. debit side, I'm getting 30 lakh 26,000. 30 lakh 26,000. Check debit side, 30 lakh 26 आ रहा है कि नहीं. Credit is 30 lakh 26,000. Check. तो फॉर्मेट याद रखना, कोई कंपल्शन नहीं है, जो फॉर्मेट करना है आप कर सकते हो. जर्नल या लेजर कॉलेज से कंफर्म कर लेना. टेस्ट में तो दिया होगा कौन सा बनाना है, जर्नल करना है कि लेजर. कॉलेज ने जर्नल बोला तो जर्नल फॉर्मेट, लेजर बोला तो लेजर फॉर्मेट. ये सिर्फ फॉर्मेट है, इसका जर्नल लेजर से कोई लेना देना नहीं है. तरीका है प्रेजेंटेशन का, एक जैसे टेबल बना दिया, पाई चार्ट बना दिया, वही डेटा का हिस्टोग्राम, बार चार्ट, ग्राफ बना दिया. इट इज सिंपली अ मोड ऑफ प्रेजेंटेशन. ओके, सिंपल सी लिस्ट भी बना दी एक के नीचे एक लिख के, तो वो भी ट्रायल बैलेंस है. नीड नॉट वरी, ट्रायल बैलेंस का कोई भी फॉर्मेट आप कर सकते हो. जर्नल लेजर, कंपल्सरी लेजर बोला है तो लेजर, जर्नल बोला है तो जर्नल करो टोटल. बाकी तो सेम ही है. लेजर में खाली लेफ्ट और राइट में करना है. 2 बाय मत लिख देना. दिस इज नॉट लेजर पोस्टिंग, सिंपली अ लिस्ट.
how many accounts will be there in a question of trial balance? Normally you have around say 5 mark question है तो you have around 12 to 14 items. थोड़ा बड़ा question 10 mark का then around 18 to 20 items. Okay. तो इतना बड़ा नहीं होगा. Hmm. These are for practice. इतना बड़ा सम नहीं है. अपना टेस्ट में लेकिन बड़ा रहेगा. अपना टेस्ट में थोड़ा बड़ा रहेगा. टेस्ट पेपर Sir, उनमें debit टॉकिंग अबाउट side कॉलेज में में कम रहता है. सॉरी या व्हाट डेबिट साइड में 30,26,000 आ गया. आ गया. हाँ चेक सर. करो बराबर डेबिट क्रेडिट दोनों. ऑल ऑफ यू चेक. डायरेक्टली छापोगे तो अंदर का गड़बड़ पता नहीं चलेगा. प्लीज चेक. कैलकुलेट ऑन योर ओन. सर टेस्ट में इतना बड़ा नहीं आएगा ना. टेस्ट में थोड़ा बड़ा ही रहेगा. तो प्रैक्टिस बराबर से करना और टोटलिंग का भी प्रैक्टिस करना. कॉलेज एग्जाम्स में इतना बड़ा नहीं रहेगा. टेस्ट में बड़ा रहेगा. टेस्ट में थोड़ा डिफिकल्ट लेवल ही आने वाला है. इसलिए मैंने बोला इंपॉर्टेंट सम के लिए पूरा सम ऑल द सम्स फ्रॉम द शीट फॉर बोथ अपना ट्रायल बैलेंस एज वेल एज पेटी कैश. ऑल द सम्स फ्रॉम द शीट. चेक करो. टोटल करो सब लोग. डू इट मैन्युअली. इधर होगा तो उधर होगा. इधर नहीं तो उधर नहीं. समझ के चलो. और अंदर का आइटम्स रॉन्ग होंगे और बाहर टोटल राइट करके आ गए ना तो डबल मार्क्स कट होएगा. याद रखना. स्टूडेंट हैव दिस हैबिट. अंदर का कुछ भी मसाला भर देंगे लास्ट में टोटल कॉपी कर लेंगे फ्रेंड से. अंदर का आइटम्स करेक्ट होना चाहिए. एवरी आइटम शुड बी करेक्ट तो टोटल राइट आएगा. अंदर का आइटम रॉन्ग है टोटल राइट है तो डबल मार्क्स कट होएगा. डोंट कॉपी. सिंपल. Same in case of petty cash. Both the chapters are based on calculation. Calculation perfectly करना है. करो. टोटल करो. सर Yeah. आपका स्क्रीन शेयर हो गया. स्क्रीन शेयर बंद हो गया ना. 1 sec. Visible now? Yes. Check total आ रहा है 30,26,000 all of you. Sir, do it. Do it. Tallies on 30,26,000. Videos on all of you. Play with the two formats, journal format and ledger format. ठीक है. Now pay attention.
Okay, total is 30,26,000. Items check कर लो बराबर से. Debit, credit. Any doubt? Any of the items all clear? Debit, credit. Assets debit, liability credit, expense debit, incomes credit. Okay. Now there is some concept called as gross trial balance and net trial balance. Okay, ये objectives के लिए important है ताकि कोई पूछेगा नहीं आपको draw क्या करना है. So let's understand what is gross trial balance and what is net trial balance. ठीक है, ये जो हमने बनाया है या फिर अब तक के हर एक सम में जो बनाया है हम जो नॉर्मली बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, दैट इज कॉल्ड एज नेट ट्रायल बैलेंस. दिस इज कॉल्ड एज नेट ट्रायल बैलेंस. व्हाट इट इज कॉल्ड एज net trial balance. Is that clear? So net trial balance is what we are making, what we have made till now, what we'll make further. So net trial balance में क्या करते हो, closing balance copy करके लिख देते हो. That is what is called as net trial balance. ठीक है. Now there is something that is called as gross trial balance. There is something that is called as gross trial balance. What do you mean by gross trial balance now? देखो, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं. यहाँ पे समझो आपका एक मशीनरी अकाउंट है. ठीक है, मशीनरी आपने साल में खरीदा तो आपने एंट्री की होगी मशीनरी टू बैंक, 50,000 का खरीदा. उसमें से समझो 30,000 का बेच दिया तो बाय बैंक 30,000 बैंक टू मशीन, नो प्रॉफिट नो लॉस. एंड बाकी का बचेगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन 20,000. बराबर है. दिस विल बी अ क्लोजिंग बैलेंस. ये पूरे साल का मशीनरी अकाउंट है. वैसे ही समझो पूरे साल का यू हैव से कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट में ओनर ने पैसा डाला होगा तो बैंक टू कैपिटल, तो कैपिटल में आया होगा बाय बैंक लेटर्स से 1 लाख रुपीस. ओके, डेबिट में कुछ नहीं है तो यही बन गया होगा टू बैलेंस कैरीड डाउन 1 लाख. बराबर है. तीसरा समझो बैंक अकाउंट है. बैंक अकाउंट में कैपिटल आया है तो बैंक में टू कैपिटल आया होगा 1 लाख रुपीस. फिर आपने मशीन खरीदा तो मशीन में टू बैंक, बैंक में बाय मशीन आया होगा 50,000 और बाय बैंक आया होगा तो बैंक में टू मशीन आया होगा यहाँ पे 30,000. तो आपका बैंक का बैलेंस आएगा बाय बैलेंस CD 80,000. Is that clear? So this is how your ledger accounts look like, right? All of you have done that. This is a ledger account. Imagine for entire year. पूरे साल का है और ये इसके क्लोजिंग बैलेंस है. तो अब मुझे जरा सोच के बताओ, अगर हम लोग नेट ट्रायल बैलेंस बनाते, if you would have made a net trial balance, then which balances we would have copied? All these closing balances we would have copied, right? हम लोग मशीनरी को डेबिट में डालते 20,000, कैपिटल क्रेडिट एंड बैंक डेबिट, एंड ट्रायल बैलेंस वुड हैव टैलीड ऑन 1 लाख रुपीस. इज दैट क्लियर? डेबिट्स आर इक्वल टू क्रेडिट्स. दिस इज कॉल्ड एज नेट ट्रायल बैलेंस. अब देखना ग्रॉस ट्रायल बैलेंस में मैं क्या करूंगा. व्हाट डू वी डू इन केस ऑफ ग्रॉस ट्रायल बैलेंस? दिस इज जस्ट फॉर थ्योरी. प्रैक्टिकली हम लोग कभी ये फॉलो नहीं करते. थ्योरी है, पहले फॉलो होता था मैनुअल प्रोसेस में, अभी बंद हो गया. तो ग्रॉस ट्रायल बैलेंस में हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग है ना लेजर को बैलेंस ही नहीं करते. ये जो बैलेंस दिख रहा है ना, ये नहीं करते. ईयर एंड पे आप लेजर को बैलेंस नहीं करोगे. ईयर एंड पे यू विल नॉट बैलेंस द लेजर. तो फिर क्या करने का, तो फिर ऐसा बनाने का. राइट अमाउंट कैसे मिलेगा? देखो देखो, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है. ठीक है, सबसे पहला है मशीनरी अकाउंट. तो मैंने लिखा है यहाँ पे मशीनरी. मैं लेजर को बैलेंस नहीं करूंगा. मैंने लेजर को बैलेंस नहीं किया है. आई हैव नॉट फाउंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस एट द ईयर एंड. एंडिंग का ईयर का मैं क्लोजिंग बैलेंस नहीं ढूंढा है. ठीक है, और सीधा ट्रायल बैलेंस बना दूंगा. और ट्रायल बैलेंस में कैसे दिखाऊंगा, मशीनरी का डेबिट साइड में भी अमाउंट आएगा, क्रेडिट में भी आएगा. लेकिन कौन सा, डेबिट का टोटल डेबिट साइड पे, क्रेडिट का टोटल क्रेडिट साइड पे. तो मशीनरी में डेबिट में आई विल राइट 50,000, क्रेडिट में आई विल राइट 30,000. दोनों लिख दूंगा. डेबिट का टोटल डेबिट में, क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में. अब यू ओनली टेल मी, ये डेबिट में 50 है, क्रेडिट में 30 है, मतलब व्हाट इज द बैलेंस इन मशीन? डेबिट माइनस क्रेडिट, इट इज हाउ मच?
20. 20,000. वही हम लोग लिखते थे नेट में डायरेक्टली डेबिट साइड पे 20,000 है ना. 50 और 30 कट करो ना तो नेट डेबिट बचेगा ना 20,000. तो मैंने क्या किया, मैंने बैलेंस नहीं लिखा, उसके जगह टोटल्स लिख दिया. So when you write the totals instead of balances, it is called as gross trial balance. It is called as gross trial balance. Is this clear? Sir, so in the question they would give the entire ledger account. नहीं, इसका क्वेश्चन आएगा ही नहीं. ये खाली थियोरिटिकल पार्ट है ऑब्जेक्टिव्स के लिए, को समझाने के लिए बता रहा हूँ. इसमें कभी कोई पूछने वाला नहीं है. नो वन फॉलोज इट. टैली पे भी नहीं, मैनुअल पे भी नहीं. ग्रॉस ट्रायल बैलेंस खाली थियोरिटिकल कंसेप्ट. ओके, पहले बैलेंस नहीं करते थे, उधर डायरेक्टली थोड़ा आलस आता है ना, डबल हजाम पट्टी, उधर भी बैलेंस करो इधर भी बैलेंस लिखो. तो ये डायरेक्टली इधर ट्रायल बैलेंस में डाल के चेक कर लेते थे टैली हो रहा है कि नहीं. तो फिर लेजर को अलग से बैलेंस नहीं करते, वो पहले होता था. अभी सब लोग बैलेंस करके ही डालते हैं नेट ट्रायल बैलेंस. थियोरी में है, इसके लिए यू नीड टू नो. ऑब्जेक्टिव में आ सकता है. वैसे दूसरा अकाउंट है कैपिटल अकाउंट. तो कैपिटल अकाउंट में खाली आई थिंक क्रेडिट साइड पे 1 लाख, तो डेबिट में नील डैश कर दो या नील लिख दो, क्रेडिट में 1 लाख. आर यू गेटिंग इट? तीसरा अकाउंट है बैंक अकाउंट. बैलेंस नहीं किया है मैंने. मैं क्या करूंगा, डेबिट का टोटल डेबिट में, क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में. तो बैंक का डेबिट का कितना है 1,30,000 और क्रेडिट का कितना है 50,000. डेबिट का है 1,30,000 और क्रेडिट का है 50,000. कैन यू ऑल सी दैट? Did you get the meaning of gross trial balance? What have I done? Got the difference between the two clearly? In net trial balance, what do we write? Do we write the totals or do we write the balances? Balance. Closing balance जो बना के लिखते हो ना, वो net trial balance है आपका, जो अभी तक बना रहे थे. Gross trial balance में will you balance the ledger account at the year end? No. No. You don't balance the ledger account. You leave them as it is. वो ऐसा क्यों करते हैं? तो डबल हजाम पट्टी, मिस्टेक हुआ तो वापस चेक करना ही है, तो आप पहले ही छोड़ दो. बैलेंस क्यों कर रहे हो? टोटल लिख दो. ये टैली तो होना ही है, दिख रहा है आपको, ये 1,80,000 पे टैली होना ही है. चाहे आप ग्रॉस ट्रायल बैलेंस बनाओ या नेट ट्रायल बैलेंस बनाओ, टैली तो होगा ही. डेबिट इक्वल टू क्रेडिट वेरीफाई हो गया, फिर आप बैलेंस कर लो, फिर आप वो बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनाओ, या यहाँ से कर लो डेबिट माइनस क्रेडिट करके फाइनल अकाउंट बनाओ. इज दैट क्लियर? तो ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, यू डोंट राइट द बैलेंस, यू राइट द टोटल. डेबिट का टोटल ऑन द डेबिट साइड, क्रेडिट का टोटल ऑन द क्रेडिट साइड. सो एवरी अकाउंट यू कैन राइट बोथ द अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट. सब, अगर कोई अकाउंट में खाली क्रेडिट है तो क्रेडिट, खाली डेबिट है तो डेबिट, दोनों है. तो डेबिट का टोटल डेबिट में, क्रेडिट का टोटल क्रेडिट. बैलेंस नहीं, टोटल लिखते हो. इज दिस क्लियर? That is what is called as gross trial balance without balancing the ledger accounts. Okay. The gross trial balance, you mention the totals. Net trial balance, you mention the balances. What we do practically, what questions you are going to get. So it is always going to be net trial balance. This is just for the purpose of objectives, theoretical part. Okay. Now I want you all to take sum number 8. Sum number 8 और sum number 9 अलग से सॉल्व नहीं करना है, वहीं पे लिखना है आपको. In the textbook itself you write it. In the textbook itself you write it. Sum number 8 and sum number 9. See sum number 8. ये रहा. आपको खाली पता करना है कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है. Okay, so I am writing down over here. You also write down DNC. खाली आंसर करते जाओ फटाफट. कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट. ड्रॉइंग्स डेबिट. परचेजेस डेबिट. एक्सपेंस. इंटरेस्ट, खाली इंटरेस्ट दिया है, खाली मालूम नहीं है कि पेड है कि रिसीव्ड है, तो क्या अज्यूम करने का? पेड है. अज्यूम इट इज पेड. ओके, दिस इज अज्यूम. तो डेबिट. डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट. इनकम टैक्स रिफंड, क्रेडिट. लाइक इनकम एडेड टू कैपिटल. बैड डेट्स रिकवरी, क्रेडिट. इनकम. सेल्स, क्रेडिट. इनकम. बैंक, डेबिट. एसेट. कमीशन, खाली कमीशन है वापस. अज्यूम इट इज डेबिट पेड. अज्यूम इट इज डेबिट पेड. अच्छा, सम में सपोज ऐसा हो गया, होने का चांस बहुत कम है, कमीशन दे दिया, बराबर है, मालूम नहीं है डेबिट है कि क्रेडिट है, आपने डाल दिया डेबिट में, और फिर प्रॉब्लम टैली नहीं हो रहा है,
और डिफरेंस वही डिफरेंस आ रहा है जो कमीशन है, मतलब कमीशन का डबल अमाउंट का डिफरेंस आएगा। डबल क्यों आएगा? क्योंकि डालना था क्रेडिट में, आपने डाल दिया डेबिट, तो डबल अमाउंट का ही डिफरेंस आएगा। तो इन दैट सिचुएशन यू कैन पुट इट ऑन द क्रेडिट साइड। इसलिए वो नोट दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के थियोरी पार्ट के नीचे कि इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, देखो ये रहा नोट, ये दिख रहा है आपको, थर्ड नोट, if only discount, rent, interest and commission is given, then we generally treat them as expenses, मतलब debit, or we will take the decision as per the requirement of the problem. We will take the decision as per the requirement of the problem. इसका मतलब क्या कि अगर डेबिट में डाल के टैली नहीं हो रहा है और डिफरेंस आपको वही अमाउंट का डबल अमाउंट आ रहा है, तो क्रेडिट में डाल दो, टैली कर दो। इज दिस क्लियर? ऐसा होने का चांस बहुत कम है, पोदार ऐसा मस्ती करता है और कोई कॉलेज नहीं करता है, ठीक है? तो पोदार में ऐसा है होने का चांस, बाकी कोई कॉलेज में नहीं होता है ऐसा। बढ़ते हैं आगे। तो 99% बाकी कॉलेज में तो तकलीफ ही नहीं है, पोदार में खाली हो सकता है, तो बाकी कॉलेज तो एक्सपेंस ही अज्यूम करना और वो टैली हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट, Debit. डेबिट, एसेट, परचेज रिटर्न्स, Credit. credit, less from purchase like an income, outstanding rent, Credit. Credit. why credit, why Liability. credit, Liability. liability है, देना बाकी है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, Credit. Credit. क्रेडिट, डेटर का रिजर्व क्रेडिट। प्रोविडेंट फंड, Credit. Credit. याद है प्रोविडेंट फंड, दैट लायबिलिटी, एम्प्लॉय का जमा पैसा, बुढ़ा रिटायर हो जाएगा तब दोगे। सेल्स रिटर्न्स, Debit. डेबिट, ऑपोजिट ऑफ सेल, लेस फ्रॉम सेल। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, Debit. Debit. डेबिट, ये याद रखना पड़ेगा, डेटर का रिजर्व क्रेडिट, क्रेडिटर का रिजर्व डेबिट, ऑपोजिट। गुडविल, Debit. डेबिट। एसेट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, Credit. क्रेडिट, इट इज नेगेटिव एसेट, याद है वो एसेट में से कम नहीं करके हर साल पीएफडी में जमा करते जाते हो, डेप्रीसिएशन। तो एसेट का वैल्यू कॉस्ट पे ही दिखेगा और डेप्रीसिएशन अलग अकाउंट में दिखेगा, पीएफडी अकाउंट। इट इज हवा ओनली, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यू मेक इट। नेगेटिव एसेट है, सो दैट्स व्हाई इट विल हैव क्रेडिट बैलेंस। ओके, कैश, Debit. Credit. कैश इज डेबिट, एसेट। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, Credit. क्रेडिट, लायबिलिटी। डिविडेंड, Credit. क्रेडिट, इनकम, डिविडेंड इज इनकम, क्रेडिट। प्रीपेड वेजेस, Debit. डेबिट, एसेट। क्रेडिटर्स, Credit. Credit. क्रेडिट, लायबिलिटी। डेटर्स, Debit. Debit. डेबिट, एसेट। बिल्स रिसीवेबल, Debit. डेबिट, एसेट। पेटेंट, Debit. डेबिट, एसेट। बिल्स पेएबल, Credit. क्रेडिट, लायबिलिटी। इंटरेस्ट रिसीवेबल, Debit. Debit. हाँ, व्हाई? Asset. एसेट, एसेट। बुक ओवरड्राफ्ट नहीं है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होगा? Credit. बैंक ओवरड्राफ्ट इज क्रेडिट, लायबिलिटी। मशीनरी, Debit. डेबिट, एसेट। लोन फ्रॉम अजय, Credit. क्रेडिट, लायबिलिटी। लोन टू विजय, Debit. Debit. डेबिट, इट्स एन एसेट। बात समझ आई? ये खाली प्रैक्टिस के लिए, ये एग्जाम से पहले कभी भी ये दो सम देख लेने का, 8 और 9, ऑल द आइटम्स आर कवर्ड। या फिर आप पहला लिस्ट देख लो जो 150 160 आइटम का लिस्ट है, ऑल आइटम्स आर कवर्ड इन दैट। ओके, 8 सम और 9 सम भी ऐसा ही है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसमें उधर ही मार्क करना। लोन गिवन, Loan given. Debit. Debit. डेबिट, एसेट। लोन टेकन, Credit. क्रेडिट, लायबिलिटी। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, चलो दिमाग लगाओ। Credit. Credit. इंटरेस्ट Income. ऑन लोन गिवन, Debit. इंटरेस्ट ऑन लोन Credit. गिवन। Credit. Income. Income. लोन दिया है ना, तो इनकम होएगा वो इंटरेस्ट, टू रिसीव द इंटरेस्ट, सो दैट्स योर इनकम, सो क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, Debit. 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 डेबिट, बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, Debit. डेबिट, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। सोचो ये एक्सपेंस है कि इनकम है? ओवरड्राफ्ट पे यू पे इंटरेस्ट, लोन गिवन पे यू रिसीव इंटरेस्ट, लोन टेकन पे यू पे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, Credit. Credit. क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट आर एसेट, उस पे इंटरेस्ट रिसीव करते हो, दिस इज इंटरेस्ट रिसीव, क्रेडिट। कमीशन रिसीव्ड, Credit. क्रेडिट। कमीशन पेड, Debit. डेबिट, एक्सपेंस। कमीशन रिसीवेबल, Credit. Debit. 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 Third. लोचा करोगे, लोचा एग्जाम में। कमीशन रिसीवेबल, Debit. Debit.
वाई डेबिट because एसेट Asset. मिलना रिसीव्ड थोड़ी है, मिलना बाकी है तो एसेट है। मैंने काम कर लिया है, तुमने फीस देनी बाकी है तो इनकम बना दूं, मिला ही नहीं है अभी तक, तो इट इज इनकम रिसीवेबल। इनकम रिसीव्ड एंट्री क्या होगी, इनकम रिसीवेबल टू इनकम, तो इनकम क्रेडिट करूंगा अक्रूवल बेसिस पे, पैसे नहीं आए ना अभी तक, कैश आ जाता तो कैश टू इनकम, इनकम रिसीवेबल है तो इनकम रिसीवेबल टू इनकम, बाद में जब भी पैसा आएगा तभी कैश टू इनकम रिसीवेबल। इनकम रिसीवेबल इज लाइक डेटर, पर्सनल अकाउंट डेटर, तो डेटर क्या होता है, एसेट होता है, कमीशन रिसीवेबल भी क्या होगा, एसेट होगा, दैट इज डेबिट। अनपेड कमीशन, Credit. अनपेड कमीशन इज क्रेडिट, लायबिलिटी ये देना बाकी है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, Credit. क्रेडिट क्रेडिट, इट्स अ लायबिलिटी, एडवांस में आ गया है, बेनिफिट देना बाकी है। कमीशन पेड इन एडवांस, Debit. डेबिट, इट्स एन एसेट। प्रीपेड कमीशन, Debit. वो भी डेबिट, एसेट। Both are same only, na both sir? are same only, commission paid in advance and prepaid commission, one and the same. Commission payable, Credit. credit, it's a liability. Outstanding commission, Credit. credit, same ही है। commission payable मतलब देना बाकी है, outstanding commission मतलब भी देना बाकी है, okay, so that is credit। assume के payable है, outstanding दोनों के लिए यूज होता है, outstanding can be payable also, receivable also, but if nothing is given we assume it is payable, so that's a liability, so credit। so ये आइटम्स है ना, आपको एग्जाम्पल के तौर पे कमीशन के साथ आया है, देखो सब कमीशन का एग्जाम्पल है। ये कमीशन के जगह इंटरेस्ट भी हो सकता है, रेंट भी हो सकता है, कोई दूसरा एक्सपेंस या इनकम हो सकता है, गॉट इट। तो लॉजिक तो वही अप्लाई करना है, रिसीवेबल है तो डेबिट, पेएबल है तो क्रेडिट, लायबिलिटी, प्रीपेड है तो डेबिट, एसेट, एंड प्री रिसीव्ड है, रिसीव्ड इन एडवांस है तो क्रेडिट, बिकॉज इट्स अ लायबिलिटी, गॉट इट। एडवांस गिवन, Debit. Debit. डेबिट, एसेट। एडवांस टेकन, Credit. क्रेडिट, लायबिलिटी। 5% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, Debit. डेबिट, इन्वेस्टमेंट, एसेट। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, expense, Debit. है, हाँ debit, हाँ, डेबिट, लाइक एन एक्सपेंस। रिटर्न आउटवर्ड, क्रेडिट क्रेडिट मतलब परचेज रिटर्न, ऑपोजिट ऑफ परचेज। फ्रेट इनवर्ड, debit, डेबिट, एक्सपेंस। फ्रेट आउटवर्ड, debit, डेबिट, एक्सपेंस। प्रोप्राइटर पर्सनल अकाउंट, याद है थियोरी के वक्त बताया था, इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ drawings, कैपिटल। ड्राइंग्स नहीं, ड्राइंग्स के लिए भी हो सकता है लेकिन सब में ड्राइंग्स अलग देगा तुमको। प्रोप्राइटर पर्सनल इज ऑलवेज अ रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल नहीं दिया तो ये दे देगा, तो इट विल हैव व्हिच बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस, ओके। दोनों नहीं देगा, या कैपिटल देगा या पर्सनल अकाउंट दे देगा। आरएफडीसी का इन्वेंटरी, सॉरी इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है, Debit. स्टॉक, Stock. ओके, अनसोल्ड गुड्स, एसेट, डेबिट। आरडीडी क्या होता है फुल फॉर्म, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। डेटर्स आरडीडी का दूसरा नाम भी है, इधर लिख लो आरबीडी, रिजर्व फॉर बैड डेट, या आरबीडीडी, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये सब एक ही चीज है। आरडीडी, आरबीडी, आरबीडीडी। रिजर्व फॉर डेटर दिखा मतलब बत्ती चमकना चाहिए, डेटर का रिजर्व विल हैव व्हिच बैलेंस, Credit. क्रेडिट बैलेंस। ये अभी याद रखो तीन आइटम, ओके। रिजर्व फॉर डेटर इज लाइक अ लायबिलिटी, क्रेडिटर इज लाइक एन एसेट, क्रेडिटर का रिजर्व लाइक एन। आरएफडीडी का फुल फॉर्म क्या है, Reserve Reserve for for doubtful doubtful debtor. नहीं, नहीं, reserve for discount on debt. हाँ, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेटर तो बाजू में आ गया, आरडीडी है वो। आरएफडीडी इज रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, व्हिच Even बैलेंस that इट विल is हैव, credit. क्रेडिट Credit. क्रेडिट बैलेंस। डेटर का रिजर्व है तो क्रेडिट, डेट्स का रिजर्व है तो क्रेडिट, क्रेडिटर का है तो डेबिट। आरएफडीसी का फुल फॉर्म, Reserve for discount. रिजर्व फॉर creditors, डिस्काउंट ऑन Debit क्रेडिटर, ओके। creditors, so क्रेडिटर debit, का रिजर्व है तो डेबिट, ऑपोजिट। इसका डिटेल में हम लोग लेजर अकाउंट, एंट्री सब बताऊंगा, फाइनल अकाउंट में बताऊंगा उस चैप्टर। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, debit, डेबिट, Expense. एक्सपेंस, या Unexpired insurance को बाकी है बोला है। insurance, अच्छा, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्या होगा,
Debit. Debit सर वो because क्या asset. होता है अनएक्सपायर्ड Unexpired means prepaid. Prepaid. Unexpired का मतलब होता है prepaid. Prepaid insurance. Correct. मतलब पे कर दिया है, बेनिफिट एक्सपायर नहीं हुआ है, मिलना बाकी है, सो इट्स एन एसेट. इनकम टैक्स Debit. Debit. बाय ड्रॉइंग. Drawing. इनकम टैक्स रिफंड Credit. क्रेडिट. कभी आप ज्यादा पे कर देते हो तो रिफंड आ जाएगा, कैपिटल में ऐड करके ओनर लेके जाएगा घर पे. तो दैट्स योर इनकम, ओनर का ही है, कैपिटल में ऐड कर दोगे. तो इनकम ही एक तरह का कैपिटल है, तो क्रेडिट. कस्टमर्स डेबिट. डेटर. सप्लायर Credit. क्रेडिट. लायबिलिटी. अकाउंट रिसीवेबल इज अनदर नेम फॉर debtor. Account receivable is another name for debtor, so debit. Account payable is another name for creditor, so credit. Book debt is what? What is book debt? So you missed bills receivable. Okay. Bad debt. Bills receivable क्या है बोलो? Debit. Debit. Asset. Bills payable Credit. credit. Liability. Customer debit, supplier credit. Account receivable का मतलब debtor debit. Account payable का मतलब creditor credit. Dividend अरे नहीं, book debts sorry. Debit. Book debts means what? Book debt means debtor only. Book debt का मतलब debtor ही होता है. Another name for debtor is book debt. Okay. Pending customers Debit. debit. ये भी debtor ही होता है. Pending customer का मतलब debit debtor. Pending supplier का मतलब होता है Credit. creditor. Credit. खाली अलग अलग नाम है. Okay. तो credit. सबका मतलब debtor और creditor हो रहा है. Dividend. Debit. Credit. Oh, हाँ. sorry, credit. Why? Dividend is always our income. Sale of scrap. Credit. Credit. Income. Chotu income. Bank commission. Debit. Debit. Expense. Bank charges. Debit. 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 Expense. Bank loan. Credit. Credit. Liability. Reserves and surplus. कुछ बत्ती चमक रहा है. Reserves and surplus. Reserves and surplus. Reserve fund. Debit. दोनों क्या है? Credit. Asset. Credit. Why credit? What are these two? They are like reserved for doubtful debtors, and it is the नहीं, profit of the owner. हाँ, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट नहीं है, वो अलग है. डेटर का क्रेडिट, क्रेडिटर का डेबिट. ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट. These are accumulated profit. So, but surplus means that the extra stock of goods which is left, right? नहीं, that is closing stock. That is closing stock. Okay. This surplus means the profits. याद है मैंने बताया था, ओनर को चाहिए कि कैपिटल थोड़ा अलग दिखे, प्रॉफिट्स अलग दिखे, तो वो अलग अकाउंट में दिखा देगा. या थोड़ा प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करेगा, थोड़ा अलग अकाउंट में दिखा देगा. So if he wants to know separately how much profits he has earned, he will put it under a separate account. That separate account is called reserves and surplus, या general reserve, revenue reserve, reserve fund, capital reserve. ये जो भी reserves and surplus है, all are your profits. Okay, thank you, sir. So reserve fund, general reserve, reserve surplus, सब कुछ आपका profit है, credit. Provision for depreciation अभी आया था. Provision for credit. This is negative asset. Negative asset. Asset का जमा हुआ डेप्री. Interest. अच्छा एक मिनट. Provision for depreciation क्या? Provident fund है. Provident fund. Credit. Credit. Liability. Okay. Provident fund contribution है. Debit. Debit. Contribution is debit. Why? Because it's your expense. Just like salary. But you don't pay to the employee, you transfer it to the fund. You keep it outstanding. Salary to outstanding है जगह contribution to fund. Provident fund investments क्या होते हैं? Debit. Why? They are assets. Assets. जो पैसा cash form में था उसको हमने invest कर लिया for the benefit of employee. And interest. Sir, can you explain provident fund again? The entire concept of provident. I'll explain. Just let me do that last one. Interest on provident fund investment. Credit. Credit. Interest on provident fund investment is credit. Now once again see. What is the entry for contribution? Contribution का मतलब क्या है? Employee की salary 10,000 है. मैं उसको 10,000 अभी नहीं दूंगा, उसको 9 ही दूंगा salary के फॉर्म में. 1,000 उसका फंड में ट्रांसफर करके रख दूंगा अभी. तो उसका एंट्री बनेगा ये. Contribution to provident fund account debit expense for me 1,000 to provident fund account 1,000. Expense to outstanding expense.
तो contribution is my expense, I will debit it to my account. मेरा business का खर्चा है तो 1000 रुपया debit expense, that is contribution. And pay नहीं किया, contribution to cash नहीं है, contribution to provident fund है, तो provident fund में डाल के रख दिया, ये liability है, तो provident fund is liability, ये पैसा देना बाकी है मेरे को, ठीक है। अब जब ये लाइबिलिटी होगी तो बैलेंस शीट ऐसा दिखेगा, समझो ये आपका बैलेंस शीट है, तो इधर बन जाएगा प्रोविडेंट फंड 1000 का और सामने कैश होगा 1000। क्यों कैश होगा 1000? क्योंकि बच गया ना, आपने पे नहीं किया है एम्प्लॉय को 1000। तो व्हाट यू विल डू विद दिस कैश, ये अभी आपको मालूम है ये 1000 अभी तो नहीं देना है, बुढ़ा रिटायर होगा तभी देना है 8-10 साल बाद, तो लेट मी इन्वेस्ट इट, उसका भला हो, उसको थोड़ा इंटरेस्ट मिले एम्प्लॉय को, तो आई विल गिव दिस कैश एंड आई विल बाय सम इन्वेस्टमेंट, तो दोज इन्वेस्टमेंट आर कॉल्ड एज प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट आर माय एसेट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स आर माय एसेट, let the money grow. That investment you would give to the employee, so it would be. I will not give that investment to the employee. Now listen what will happen. Investment किया अभी 1000 रुपए का, okay, this is business का asset. Now उस पे जो interest आएगा ना, जो ब्याज मिलेगा मेरे को, अभी 1 साल बाद समझो I receive 100 rupees on that. So what entry I pass normally for interest? Cash to interest, 100 rupees. And what happens to this interest? This interest is my income ना business का normally. तो business का income है, मतलब profit बढ़ाएगा तो capital में चला जाएगा, तो normally this interest goes to capital. But in this case provident fund का जो investment होता है उस पे जो interest मिलता है वो capital में add नहीं करोगे liability में, आप you won't add it to capital, you will add it to provident fund. तो interest on प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज आप इसी में ऐड कर दो प्रोविडेंट फंड में, और इधर कैश में आपको 100 दिख रहा है, कैश में 100 क्या दिख रहा है? वो रुपया जो आया 100 इंटरेस्ट का, तो कैश टू इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट इंक्रीजेस द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट गोज टू कैपिटल, तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट इज गोइंग टू कैपिटल। नॉर्मली क्या होता है, एसेट साइड कैश बढ़ता है और कैपिटल में इंटरेस्ट ऐड होके लायबिलिटी बढ़ जाती है। इन दिस केस थोड़ा अलग होता है, एसेट साइड कैश बढ़ेगा लेकिन लायबिलिटी साइड कैपिटल में ऐड नहीं होएगा, यू विल एड इट टू प्रोविडेंट फंड। मतलब अभी आप क्या बोल रहे हो कि एम्प्लॉय को आपको कितना देना है, 1100 देना है, 1000 ऑफ फंड प्लस 100 ऑफ इंटरेस्ट। अब जब पैसा देने का बारी आएगा ना, तब क्या करोगे आप, इन्वेस्टमेंट उठा के नहीं दोगे इसको, अपना एम्प्लॉय को, वो क्या करेगा इन्वेस्टमेंट को, उसको पैसा चाहिए, तो आप क्या करोगे, अपना इन्वेस्टमेंट बेच दोगे, ये इन्वेस्टमेंट सेल कर दोगे वापस। तो सेल करोगे तो क्या होएगा, इन्वेस्टमेंट चला जाएगा एंड इसके जगह क्या मिल जाएगा आपको वापस, पैसा, इधर कैश आ जाएगा। अभी आपके पास कितना कैश है, 1000 प्लस 100, 1100 कैश है, ये उठा के आप पीएफ का लायबिलिटी चुका दोगे। पीएफ का कितना लायबिलिटी है अभी, टोटल 1100 का लायबिलिटी, दैट यू विल रीपे। उसका एंट्री होगा प्रोविडेंट फंड टू कैश, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी टू कैश करते हो वैसे प्रोविडेंट फंड टू कैश 1100। इन्वेस्टमेंट्स नहीं देना है, इन्वेस्टमेंट हम सेल करेंगे, पैसा लेंगे और पैसा दे देंगे इन टू आवर एम्प्लॉय। सो इन्वेस्टमेंट्स बिजनेस का एसेट के फॉर्म में ही दिखेगा, लायबिलिटी हमेशा पीएफ है। जैसे आपने बैंक लोन लिया है तो उसके सामने कैश भी आया है, कैश इज नॉट अ लायबिलिटी, कैश इज एसेट, बट बैंक लोन is liability. Whenever you want to repay, you will repay it with that asset. That loan you will repay with that asset. Is that clear? Or the concept? So 4 items. Contribution is your expense, that is debit. That will reduce your profits. Provident fund is a liability, that is credit. Investments are asset, so debit, and interest on What is interest on provident fund investment? Income. Income nahi. Income is a liability because it is going to be paid. हाँ, normally any interest is business का income, but this interest is business का liability. So credit है, credit ही आंसर आपका करेक्ट ही है, खाली रीजन याद रखना, it is a liability. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों बैलेंस हो सकता है, डेबिट और क्रेडिट, बट कुछ नहीं दिया है तो डेबिट, हाँ क्रेडिट।
इट रिप्रेजेंट्स नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ये भी कंसेप्ट फाइनल अकाउंट में डिटेल में समझ आ जाएगा। नेट प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ नहीं दिया है तो क्रेडिट बैलेंस, नोट में भी दिया है, देखो यहाँ पे आ गया, ये रहा। Profit and loss account has the possibility of both the balance. Generally, they give the information. However, if no information is given, we'll take it as credit. Okay. Keep that in mind. Then, what do we have? Interest, normal interest, only Debit. interest, debit, expense. Interest paid, Debit. debit, expense. Interest received, Credit. credit, income. Outstanding interest, मतलब payable. Outstanding, मतलब payable. So it is credit, liability. Prepaid interest, Debit. debit, asset. Unpaid interest, Credit. पेड का मतलब भी पेएबल है ना, लाइबिलिटी, सो क्रेडिट। इंटरेस्ट पेएबल सेम ही है, Credit. क्रेडिट लाइबिलिटी। इंटरेस्ट पेड इन एडवांस, Debit. डेबिट एसेट। इंटरेस्ट रिसीवेबल, Credit. Sorry. Debit. Asset. वाई एसेट। इंटरेस्ट रिसीवेबल मिलना बाकी है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, Credit. क्रेडिट, दैट्स योर लाइबिलिटी। लोन फ्रॉम अजय, Credit. Credit. क्रेडिट लाइबिलिटी। लोन टू अजय, Debit. डेबिट एसेट। लो इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अजय, Debit. debit, that is your expense. Interest on loan to Ajay, Credit. Credit. credit, that's your income. Interest on investments, Credit. Credit. credit, income. Interest on overdraft, Debit. debit, expense. And interest on bank loan, Debit. debit, because expense. Okay. So that's your sum number 8 and sum number 9. Last sum, then थोड़ा सा मेरे को objective discuss करना है 5 मिनट. Last sum बचा है. Sum number 10, mark it down quickly. Compiler tally trial balance as on 31st December 2000 from the following balances of some transactions. अतरंगी sum है, सोच के करना. Pending customers, अभी किया, सोचो. Debit. Debit, debtors होता है वो. Pending customer debit. Pending customers are debit. Other current asset, Debit. 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 Asset है. Pending supplier, Credit. credit. Goods bought म्हणजे Purchase. Purchase. Debit. goods sold म्हणजे Sales. Credit. credit. Fixed assets, Debit. debit. Purchase returns, Credit. credit. Sales returns, Debit. debit. Cash and bank, Debit. debit. बैंक अकाउंट नंबर 2 CR दिया हुआ है, मतलब Credit. क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट होगा आपका। 2 अकाउंट है इसके पास। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बोरोइंग्स मतलब Loan. Credit. लोन, Credit. मतलब क्रेडिट, ये लोन है, ये लोन। प्रोप्राइटर कुमार पर्सनल Credit. अकाउंट, Credit. क्रेडिट Credit. is nothing but capital. Salary and wages, Debit. debit. Proprietor withdrawal, Debit. Drawings. drawing. Withdrawal मतलब drawings, debit. Rental bill for office premise, Debit. debit. Rental bill means rent paid, rent expense. Commission received. Credit. Credit. बनाओ फटाफट, जर्नल फॉर्मेट करना, पहला वाला ओरिजिनल, नॉट लेजर, जर्नल फॉर्मेट। फटाफट करो टैली, लास्ट सम, देन क्विकली ऑब्जेक्टिव्स। टेस्ट में ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, पैटर्न मैंने भेजा हुआ है। पेटी कैश एंड ट्रायल बैलेंस का 2 सम्स है। सम्स थोड़ा लेंदी होगा, ऑब्वियसली डोंट एक्सपेक्ट वेरी इजी क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट सम्स के लिए शीट का सब प्रॉब्लम, पेटी कैश का भी और ट्रायल बैलेंस का भी। कैलकुलेशन का ध्यान रखना, एक दूसरे पे भरोसा मत रखो, छापने का सबका आंसर रॉन्ग हो सकता है। ओके, प्लस माइनस में सिली मिस्टेक हो सकता है, खुद पे भरोसा रखो। जितना अभी करोगे उतना इट विल बी हेल्पफुल इन योर फाइनल अकाउंट चैप्टर, इवन इन योर 12th स्टैंडर्ड बिग कैलकुलेशंस यू आर हैविंग। तो जितना कैलकुलेशन का हैबिट डालोगे उतना यू विल बी शार्पनिंग योरसेल्फ। डू इट ऑन योर ओन, जर्नल फॉर्मेट करो।
सैटरडे टेस्ट है अपना 9:30 to 10:30. ओके, 1 hour टेस्ट. Send some debit balance. डेबिट साइड क्रेडिट साइड टोटल करो. 1,63,100. बोथ द साइड्स यू डिड. Yeah. टैली No, I'll do credit right now. करो करो I did करो, debit. दोनों करो. टैली करना चाहिए, टैली होना चाहिए. चेक. सर दोनों साइड 1,63,100 आया. 1,63,100 both the sides. Please check. Tenth sum. खुद से करना, सीधा छाप दोगे, अंदर मिस्टेक होगा, पता भी नहीं चलेगा. Do it on your own. So what is coming as the total? Total 163,100. Both the sides. 163,100. 163,100. हो रहा है? What's the total?
163 100. You getting that? Yes. One 163 100. Got that? Now, if you have standard textbook, please take out that page number 168. हमने before Diwali जो subsidiary किया था उसका objectives we have discussed. Now the remaining objectives let's find up quickly. Page 168. Standard textbook. क्या हुआ मोक्ष? कि मुझे पता लग रहा है कि इसका सिर्फ 3 ही टास्क बना हुआ है, बाकी टास्क है ही नहीं। मोक्ष, what happened? कौन सा लेक्चर चालू है तुम्हारा? क्या कर रहा है मोक्ष? You have doubt, मोक्ष बोलो। हमारे घर से ज्यादा आवाज आ रहा है तुम्हारा। Let it be you. Ask me बाद में, आराम से पूछ लो। Okay. Ask me later. 163 100 is the total. Okay. 163 100 is the total. Now, page 168 standard textbook. Let's take the remaining objectives. ये देखो जो बाकी का है subsidiary book, purchase book, sales book, we have already written those. What is cash book? Now you know what is cash book. Cash book is a subsidiary book open to what? Why do we open cash book? To record cash transactions. Open to record cash and bank transaction. Okay. State the meaning of contra entry. You know what is the meaning of contra entry now? Entry involving Only Cash cash and bank. Bank account. both cash and bank. Entry involving both cash and bank account. Okay, is called contra entry. Example लिख सकते हो, cash deposited या check deposited in bank and cash withdrawn from bank. Cash withdrawn from bank. State the meaning of impressed system of petty cash book. लिखवाया था याद है impressed system. The third point in our theory आपने लिखा हुआ है format के नीचे. It is a system wherein such an amount is given by the main cashier to the petty cashier at the beginning of each month, so that total amount with the petty cashier should remain fixed. Such a total amount is called as float or impress. Third point of theory, format के नीचे. So impress system is what? Such an amount is given by main cashier to petty cashier so that total amount should remain fixed. That total amount is called as float or impress. Who is a petty cashier? Question number 8. Who is a petty cashier? Who maintains petty cash? One who maintains petty cash book. One who maintains petty cash book. Okay. जो main cashier है, he'll maintain what? Cash. Main cash book. उसको main cashier या chief cashier दोनों बोलते हैं. Chief cashier या main cashier. Okay. फिर one word. Person who maintains petty cash book. Petty cashier. Petty cash. Petty cashier. Then third one, petty cash book in which payment side is ruled into suitable columns is called analytical petty cash book. याद है बताया था दो होता है, अगर मल्टीपल कॉलम नहीं है तो सिंपल पेटी कैश बुक, मल्टीपल कॉलम है तो एनालिटिकल. एंट्री विच इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ कैश बुक. Contra entry. कॉन्ट्रा एंट्री. कॉन्ट्रा एंट्री ये भी लिख सकते हो आप उसके डेफिनेशन में, बोथ साइड्स ऑफ कैश बुक. बस हो गया ये. Fill up cash column of cash book can never have dash balance. Credit. Credit balance. Can be debit, can be zero.
but can never be credit. Okay. An entry recorded on both the sides of cash book is known as contra entry. Contra entry. Then eighth one, direct deposit made by customer into our bank is recorded on the dash side of cash book. Direct deposit by customer is recorded on the debit side of cash book. Receipt side. Receipt मतलब debit. Bank to customer होता है ना entry. याद है? So debit receipt side to customer in the bank column. The person who draws the check and signs on it is called as drawer. याद है? How many parties to a check? 3. 3 parties. Drawer, drawee, payee. Drawer कौन होता है? One who makes the check. Payee कौन होता है? Who is a payee? One who receives the money. Yatrangi नाम है. One who pays is not payee. One who receives is a payee. One who draws is a drawer. One who writes. जिसको पैसा देना है ना वो drawer है. जिसको पैसा receive करना है वो payee है. और drawee कौन है फिर? बैंक. The bank. मैं instruct करेगा मेरे बैंक को कि उसको pay करो. Okay. So I am the drawer. Bank is the drawee. One who receives the amount that is the payee. That in mind. फिर आते हैं state whether true or false for fifth one. Cash book records transaction relating to receipts and payments of cash. False. Bank also. Bank also, but cash book records transactions relating to receipts and payments of cash. That is in a way true only. ना simple cash book में आप cash में भी receive और pay करते हो वो record that, right? And I think when you tell cash, it means cash and bank both. हाँ, cash means And cash not on transaction. credit. दोनों हो गया. Not on credit. हाँ, that is true. Okay. Cash book records transaction relating to receipts and payments of cash. That is true. ऐसा दिया है कि cash book records credit transaction, cash book records non-cash items. So that is false. Trade discount is recorded in cash book. True or false? False. Disagree. Not even in journal. Not even in journal. Petty cash book is a book having record of big payments. Disagree. Disagree. Chotu, small. Cash received is entered on the debit side of cash book. Agree. On the receipt side, true. True. Agree. The transactions record on both debit and credit side of cash book are called contra entry. Agree. Then cash book is a dash journal. Cash book is a dash journal. Subsidiary journal. Double column cash book records transaction relating to cash and bank. Idhar chalega bank. Okay. Actually, it is cash and discount. But abhi chalta hai idhar double column cash and bank we follow. Cash book does not record the dash transaction. Credit transaction. Credit balance shown by bank column in cash book is called bank overdraft. Petty cash book is used for recording dash expenses. Small expenses. Small का मतलब petty. Small या petty. Sundry expenses आएगा. Sundry is a part. Okay. General में बाकी सब भी आ जाता है ना उसमें postage printing छोटा amount. Small या petty expense. Cash book records correct the following and rewrite का second one. Cash book records cash transaction as well as credit transactions. Only cash transactions. Only cash and bank या cash. Person who maintains petty cash book is called chief cashier. Petty cashier. Or less petty cashier. Calculate the following. चलो ये पहला वाला calculate करो. नहीं पहला वाला किया था हमने पता नहीं. चलो कर लो. First वाला कर लो. Cash purchases 1,60,000, 10% TD, 5% CD. What is the amount of net purchases? Simple है. Net purchases कितना है? Will you subtract both the discounts or only trade discount? 1,44,000. Only trade discount. 1,44,000 is your net purchase. Got it? Cash paid is 1,44,000 per 5% CD. Net purchase is after TD, gross or net. Okay? So 1,44,000. और net मतलब क्या? After TD only. After TD. After CD जो आता है वो cash price होता है. That is cash price. That is cash paid. Net is gross net किया ना gross net returns में. That is after TD, net purchase.
कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. कैश परचेज 35, क्रेडिट परचेज 55, परचेज रिटर्न मालूम नहीं है तो नेट परचेज कितना आएगा? Purchase return is 2000. 2000 is purchase return. Got it? Cash plus credit minus 2 is 88. Cash sales, credit sales, sales return, total sales. So I think cash sales कितना होगा आपका? 45. 45,000. Cash sales plus credit sales less trade discount 2 lakh minus 16. 1,84,000. 1,84,000. Cash purchase 70, credit purchase question mark, trade discount 18, net purchases are 162. 1 lakh. So 1 lakh? नहीं. 10,000. 1,10,000. 1,10,000. तो 180 होएगा ना, 180 minus 18 160. ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश मालूम नहीं है, कैश रिसीट्स मालूम है, कैश पेमेंट्स मालूम है, टोटल बैलेंस कैश मालूम. 8,000. 8,000 is opening balance plus 60 68 minus 45 is 20. Cash sales 120, credit sales 140, so that 260 total sales minus total debtor. अच्छा ओके. 0. टोटल डेटर नहीं जीरो कैसा? Cash sales are 120, credit sales are 1,40,000 is equal to total sales. इसलिए ये लोग ने बराबर फ्रेम नहीं किया है. टोटल सेल्स आर 260 और The total is coming as 260 only. हाँ वो ठीक है, बट 140 आना चाहिए ना. फ्रेम बराबर नहीं किया है. 140 शुड बी योर 140 आना डेटर. चाहिए. क्रेडिट सेल के लिए डेटर रहेगा. ये टोटल सेल्स नहीं होना चाहिए, कैश रिसीव्ड होना चाहिए. कैश रिसीव्ड शुड बी 120 एंड टोटल डेटर्स आर 140. ये प्लस होगा. तो कैश रिसीव्ड इज 120 प्लस टोटल डेटर्स आर 140. ये पैसा लेना बाकी है. कैश सेल्स आर 120, क्रेडिट सेल्स आर 140. कैश परचेज इज 80, क्रेडिट परचेज इज इसमें भी वही इधर भी 0 दिया है. भी अलग है. हाँ इधर बराबर दिया है, देखो इधर करेक्ट दिया है. कैश परचेजेस आर 80,000. अच्छा ठीक है, तो ऊपर भी वैसे ही अज्यूम किया है ये लोग ने. ठीक है, तो ऊपर वाला भी कैंसिल मत करो, सेम ही रखो, 0 कर दो, मेक इट नील. इसका मीनिंग क्या हो रहा है देखो, आपने कैश सेल्स किया है 1,20,000 और क्रेडिट सेल्स किया 1,40,000, मतलब डेटर से पैसा आना बाकी आपका 140. ओके, टोटल सेल्स दिया हुआ है 2,60,000. एक्चुअली टोटल सेल्स नहीं, टोटल कैश रिसीव्ड होना चाहिए. तो आपका डेटर 0 है, मतलब डेटर से पूरा पैसा आ गया आपका. दैट इज द मीन. अब नीचे देखो, कैश परचेजेस आर 80, क्रेडिट परचेजेस क्वेश्चन मार्क है, टोटल परचेजेस आर 190 माइनस टोटल क्रेडिटर्स. टोटल क्रेडिटर्स आर 110. तो आपका एक्चुअल क्रेडिट परचेज कितना रहेगा यहाँ पे? क्रेडिट परचेज शुड बी 1,10,000. 1,10,000. Right. 1,10,000 बराबर है ना? 1,10,000. 1,10,000 is your credit. एक सेकेंड, स्क्रीन शेयरिंग है ना. 1,10,000 is your credit purchase. Just a second. Sir, it should be nil, right? Because total purchases minus total creditors is 80,000. 1,10,000 आना चाहिए, 80,000 नहीं आएगा. Is it visible the screen? No sir. No, sir. अरे यार, just a second. वो एक्चुअली मिस्टेक ही है, एक्चुअली दोनों का मिस्टेक ही है. It should be what? Simply it should be cash purchase, credit purchase. तो कैश और क्रेडिट को ऐड करोगे तो टोटल परचेज मिल जाता है. और जो क्रेडिटर का अमाउंट है ना, दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू योर क्रेडिट परचेज. कीप दैट इन माइंड. ओके, ऊपर वाले में भी गड़बड़ी है, इट इज नॉट गिवन करेक्ट. कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स. दैट इज वन पार्ट. अब जो क्रेडिट सेल है उतना ही तुम्हारा डेटर होना चाहिए, क्योंकि जो क्रेडिट सेल है उतना पैसा आपको डेटर से लेना बाकी. इज दिस क्लियर? तो कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, कैश सेल, क्रेडिट सेल. तो पैसा कितना आ गया वो दिया ही नहीं है वहां पे. कैश रिसीव का कुछ कंपोनेंट ही नहीं है. समझा?
तो दोनों में वो एक्चुअली फ्रेम नहीं किया बराबर. इट शुड बी कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज इक्वल टू टोटल परचेज. कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स. और जितना टोटल क्रेडिट सेल है उतना डेटर होना चाहिए, और जितना टोटल क्रेडिट परचेज है उतना क्रेडिटर होना चाहिए. ओके, क्लियर? कीप दैट इन माइंड. दोनों को एक्चुअली दे हैव नॉट फ्रेम्ड इट राइट. नेक्स्ट वन पे जाओ. जस्ट अ सेकंड, आई एम रीस्टार्टिंग. Am I audible? Hello. Yes, you are. Okay. Acha, screen is visible now. No. आया? तो Yes. कैश परचेज क्रेडिट परचेज. ओके, जितना क्रेडिट सेल है उतना आपका डेटर होना चाहिए. ये नील नहीं होगा एक्चुअली, ऊपर भी गड़बड़ी है. और जितना क्रेडिट परचेज है उतना आपका क्रेडिटर होना चाहिए. ओके. ओपनिंग पेटी कैश बैलेंस इज 250, पेटी कैश रिसीव्ड इज 1750, एक्सपेंस पेड कितना होगा तो क्लोजिंग बैलेंस 1580. 1580. ओपनिंग पेटी कैश इज 400, पेटी कैश रिसीव्ड मालूम नहीं है, पेटी कैश एक्सपेंसेस आर 1800. 1650. Opening petty cash balance, we don't know. 1800 minus 2250 give us 150 as closing balance. So 600 is opening. 2400 होता है बराबर. बस लेजर के पार्ट पे आ जाओ. लेजर चैप्टर का अपना थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव्स मैंने छोड़ा था. लेजर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स है आपका पेज नंबर ये रहा. पेज नंबर 114 पे. पेज नंबर 114 पे आ जाओ. कम टू पेज नंबर 114. उसमें 8th वाला, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस. नाउ वी नो व्हाट इज ट्रायल बैलेंस. इट इज अ व्हाट? लिस्ट ऑफ ऑल लेजर balances generally prepared at your end. List of all ledger balances generally prepared at your end. Okay. Then question 2 का भी 8th one छोड़ा था. Trial balance in which only net balance of all ledger accounts are transferred is called net trial balance. And जिधर totals transfer होते हैं, अभी explain किया ना आपको, gross और net याद है. Totals transfer होते हैं, that is called as Gross balance. Gross trial balance. Okay, this is net trial balance. फिर Phillips का भी 8th वाला. Dash is prepared to test arithmetical accuracy of the books of accounts. Trial balance. Okay. Then question true or false का 4th one. Balances of nominal accounts are carried forward to the next year. Profit and loss. Profit and loss. False. They are transferred to profit and loss. याद है बताया था ट्रायल बैलेंस के इंट्रो पार्ट में. Nominal accounts are not carried forward. They are shut down. They are transferred to P&L account. Close हो जाता है. 7th one. Agreement of trial balance always proves accounting accuracy. देखो, is this true or false? पहले ये सोच के बता. False. False. Mathematical accuracy. Arithmetical accuracy. What is accounting accuracy? Accounting accuracy मतलब कुछ भी मिस्टेक नहीं है. ऐसा इंश्योरिटी दे देता है क्या ट्रायल बैलेंस कि कोई मिस्टेक ही नहीं किया है? पूरा गारंटी देता है क्या ट्रायल बैलेंस? नो. ट्रायल बैलेंस सिर्फ अरिथमेटिकल मतलब मैथमेटिक्स आपका राइट है. डेबिट राइट है, क्रेडिट राइट है, बैलेंस राइट है. अगर मैंने कोई एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की है, विल ट्रायल बैलेंस बी एबल टू डिटेक्ट दैट? No. अगर मैंने दोनों अकाउंट में गलत अमाउंट लिख दिया, विल ट्रायल बैलेंस बी एबल टू डिटेक्ट दैट?
No, there are only certain mathematical debit credit imbalance वाला errors, वो आपको पता चल जाए. Arithmetic accuracy, not accounting. Overall accuracy is not given by trial balance. Okay, तो कैसा मालूम पड़ेगा overall accuracy? ढूंढो, vouching करो, vouchers लो, bills लो, invoices लो, receipt voucher लो, verify them with the transactions and then find out whether you have done any mistake or not. That's a very tedious process. Okay, takes a long time. Suppose there are any errors, you find them. Trial balance is based on double entry principle, for that every debit is equal to corresponding credit. True. तो ही वो tally होगा, वरना नहीं होगा. Fill in the blanks का fifth one. Dash accounts are closed by transferring its balance to profit and loss account. Nominal. Nominal, all expense and income. What about real and personal? Will you transfer it to any other account? Assets, liabilities? No. No. They don't get transferred, they get carried forward. Balance, balance, balance. बताया था हूँ. 12 month के end में भी balance, balance, balance. Okay? उसको खाली लिस्ट बना के बैलेंस शीट में दिखा दो, बट वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है बैलेंस शीट. इज जस्ट शोन एज अ लिस्ट. बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ही होगा. फिर था अपना खत्म ना, और कुछ नहीं, बस इतना सा ऑब्जेक्टिव्स था. रिवाइज करना बराबर से. टेस्ट के लिए ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, खाली क्वेश्चंस है, नॉर्मल क्वेश्चंस. 2 ऑफ पेटी कैश, 2 ऑफ ट्रायल बैलेंस, सैटरडे. ओके, रिवाइज प्रॉपर्ली. वेकेशंस में जो चैप्टर्स किए हुए हैं, टेक अ ब्रीफ ऑफ, टेक ऑब्जेक्टिव्स. ओके, कॉलेजेस में है वेकेशन क्रिसमस का कि नहीं है? एनएम का कुछ नहीं दिया है. बाकी कॉलेजेस स्टार्ट हो रहा है, कभी कुछ बोला? भाई का मैसेज था ऑन द ग्रुप भी ऐड के. शी वेंट आज yesterday आईटी का फाइनल लिस्ट निकला एंड दे विल गिव अ, इट विल स्टार्ट इन 1-2 वीक्स, मतलब आफ्टर 1-2 वीक्स. ओके, तो जनवरी होगा. तो थोड़ा बहुत मजा कर लो वेकेशन में, और थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करना. ठीक है, चलो. वी मीट ऑन सैटरडे. पहले टेस्ट लिखना, उसके बाद वेकेशन. ठीक है, सैटरडे 9:30. सॉरी, क्वेश्चन 6 ये सॉल्व ना. नहीं, अपने इसी चैप्टर का बुक, आपके बुक से. क्वेश्चन 6 नहीं किया है क्या ट्रायल बैलेंस का? नहीं किया. अच्छा, तो होमवर्क ले लो. मार्क इट डाउन फटाफट. क्वेश्चन 6, मशीनरी इज डेबिट. फटाफट लेते जाओ. मशीनरी इज डेबिट, इंश्योरेंस इज डेबिट, एक्सपेंस, परचेजेस, कम ऑन. Debit. Purchases are debit, sales are Credit. credit, bank overdraft, Credit. liability, wages, Debit. debit, advertisement, debit, drawings, debit, bills payable, credit, furniture, debit, printing and stationery, debit, discount, DR दिया हुआ है, debit, creditors, credit. Stock on 1/4/11, कौन सा स्टॉक होगा 1/4/11? opening stock. Ending is 31st March 12. So that is debit. First expense. Traveling expenses are debit. Bad debts, debit. Bank loan, Credit. debtors, debit. Factory rent, debit. Sales returns, debit. Purchase returns, credit. Capital, credit. Salaries, debit. Office rent, debit. Discount CR is credit. RDD is Credit. debtor का reserve is credit. Can you Sorry, discount CR? discount CR is credit. Discount received. CR is the answer है, credit. Discount DR is allowed, debit. Okay, one is discount allowed, one is discount received. So we stop at this point. Saturday test, vacations में revise करना बराबर से. We'll meet at 9:15 on Saturday. 15 मिनट पहले आ जाना. तो डाउट्स है तो still you can wait, otherwise you can leave. Bye sir, thank you.